Good evening, all of you. Am I audible? Okay. Is the white screen visible? Okay, okay. All right. So we did Africa in the last class. Now let us move to Australia. We have seen few things about Australia. It should be quick to understand. Okay. So 30 degrees south latitude passes through the southern region of Australia. Okay. The equator passes much north of Australia, and we have the Great Dividing Range on the eastern coastline, and this region is under the influence of southeasterlies, and there's a warm current here, East Australian current, these southeasterlies also blow in the central and western region. On the western coastline, there is a cold current, West Australian. It is a cold current. Beyond 30 degrees south latitude also blows. यहाँ पे जो wind है, they are north westerlies. Right. So very simple. When southeasterlies blow between 0 degree latitude and 30 degree south latitude in this region here, we're talking about the eastern coastline. Obviously, they bring rainfall on the eastern coast. Right. यहाँ पे rainfall लेके आते हैं. And by the time these southeasterlies continue to blow in the central and western region, they become dry, and that's why they create the desert starting from central Australia, and which exists almost up to
up to the western coastline. Okay, पूरा desert है. Sandy desert in the north, Gibson south of Sandy, and Victoria desert in the south, right? Sandy, Gibson, Victoria, 3 deserts. Plus you see, beyond 30 degree south latitude also the desert extends. यहाँ पे भी desert है, पूरा region desert है. The reason why the desert extends beyond 30 degrees south is extremely clear to us. The reason is West Australian cold current. So when northwesterlies blow over West Australian cold current in this belt, right, they are not able to pick up much moisture and hence no rainfall. Desert यहाँ तक extend होता है. So our eastern coastline is a belt of heavy rainfall and western coastline is a belt of negligible rainfall. एक तरफ heavy rainfall, एक तरफ negligible rainfall. So eastern coastline, warm current plus onshore winds, heavy rainfall. Western coastline, cold current and onshore northwesterlies, no rainfall. Beyond 30 degrees south latitude, desert extends beyond 30 degrees south, and in the north, the offshore winds, which are northwesterlies, they are not able to bring rainfall because they become offshore, right? They become offshore. तो साउथ ईस्टर्लीज ऑफशोर हो जाते हैं on the western coastline, and on the eastern coastline these winds are, as we know, they are onshore. Okay, डायग्राम बना लो. Then we will write. Let me know when the diagram is made. हाँ बोलो. सर यहाँ पे कौन सा विंड ऑनशोर होगा? नॉर्थ ईस्टर्ली. साउथ ईस्टर्लीज ना, ये वाला. ऑनशोर. हाँ ठीक है. South easterlies onshore, they are blowing from sea to land, ocean to land, and यही साउथ ईस्टर्लीज जब वेस्टर्न कोस्टलाइन पे पहुंचते हैं तो दे बिकम ऑफशोर, मतलब दे आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू ओशन. And beyond 30 degrees south latitude, the extension of the desert in the western region is because northwesterlies have become dry because of cold current. They are onshore, they are blowing from ocean to land. But since they are blowing over the cold current, they are not able to bring rainfall, and that's why the desert extends beyond 30 degrees south latitude. Please let me know when the diagram is made. Please write down.
Australia is located in the southern hemisphere. Australia is located in the southern hemisphere. Comma. 30 degrees south latitude cuts across the southern region of Australia. Cuts across the southern region of Australia. Full stop. Most of the geographical landmass of Australia, most of the geographical landmass of Australia lies in the southeasterly wind zone, lies in the southeasterly wind zone southeasterlies wind zone full stop. These winds blow over warm East Australian current. These winds blow over warm East Australian current warm East Australian current and bring heavy rainfall. Heavy rain. बोलो. These winds blow over warm East Australian current and bring heavy rainfall east of Great Dividing Range. East of Great Dividing Range. Full stop. Full stop. Westward. These winds continue to lose moisture. These winds continue to lose moisture. When they blow over central and western Australia. When they blow over central and western Australia. Comma, therefore, create deserts in the form of sandy. Create deserts in the form of sandy, Gibson, and Victoria. Sandy, Gibson, and Victoria. From north to south. From north to south. Full stop.
By the time southeasterlies reach the western coastline, by the time southeasterlies reach the western coastline, comma, they become offshore. They become offshore. And hence, the desert exists. The desert exists up to the western coastline in Australia. Desert exists up to the western coastline in Australia. Full stop. Next paragraph. Beyond 30 degrees south latitude, beyond 30 degrees south latitude, northwesterlies blow on the western coastline as onshore winds. Northwesterlies blow on the western coastline as onshore winds, but as they blow over, northwesterlies blow as onshore winds, but as they blow over, the cold West Australian current, the cold West Australian current they are not able to pick up moisture. They are not able to pick up moisture, and therefore do not bring rainfall in the southwestern corner of Australia. Do not bring rainfall in the southwestern corner of Australia. Full stop. Due to negligible rainfall, the desert of Victoria extends beyond 30 degrees south latitude. Beyond 30 degrees south latitude.
Okay. Now coming to North Indian Ocean currents. Put the heading as North Indian Ocean currents. See, this is India, this is Iran, this is Arabian Peninsula, this one here. देखो, नॉर्थ इंडियन ओशन हम एकदम लास्ट में आके पढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है. दिस इज एशिया. ओके, सो एशिया में, and especially when we talk of North Indian Ocean, beyond 0 degree latitude in the northern hemisphere, you see one thing very, very clearly, that there is more of land mass and जो वाटर है ओशन में, वो जो जोग्राफिकल एरिया है कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स, इट इज क्वाइट लेस. अगर आप देखो जो इंडिया का टिप है वो कितना है, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. तो ये जो लैटिट्यूडनल रेंज है, it is equivalent to 8 degrees multiplied by 111 kilometers. Right, 1 degree is equivalent to 111 kilometers. So this is equal to 888 kilometers only. So north to south, maximum to maximum 888 kilometers के लिए extend करता है, right? Narrow belt है ocean की, इसको नोट कर लेना, फिर मैं इसको रब करूंगा, ठीक है. 0 डिग्री लैटिट्यूड से 8 डिग्री नॉर्थ, तो टोटल 8 डिग्रीज of latitudinal distance multiplied by 111 kilometers is equal to 888 kilometers. Now, since there is an ocean, भी एक ocean है, तो यहाँ पे एक करंट तो फ्लो करेगा
from east to west, that is north इक्वेटोरियल करंट। ठीक है ना, ये है। बट apart from North Indian current, there is no other significant current in the region। देखिए उसका कारण है कि लैंड मास ज्यादा है, वाटर इन द ओशन इज लेस। ओके, अब ये जो हमारा एशिया है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द होल ऑफ एशिया कैरेक्टराइज्ड बाय मॉनसून। यहां पे क्या है? मॉनसून। मॉनसून क्या होता है? मॉनसून इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। समर्स में डिफरेंट विंड सिस्टम ब्लो करेगा, विंटर्स में डिफरेंट विंड सिस्टम ब्लो करेगा। ठीक है, मॉनसून किसकी वजह से क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ लार्ज pressure difference, large pressure difference between land and ocean, large pressure difference between land and ocean। okay, अब देखते हैं समर्स में क्या हो रहा है और देखते हैं विंटर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आई विल गो टू अनदर डायग्राम। ओके, मॉनसून किसकी वजह से होता है? लार्ज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड ओशन। नोटेड? Noted? Yes, sir. Yes, sir. Now, yeah, okay, good. Let us see what's happening in summers। देखिए, our equator is here। समर्स में क्या होता है? द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कहां पे होती हैं? जून, मंथ ऑफ जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर has the direct rays of the sun, right? Everywhere the sun is present, everywhere the direct rays on this latitude। And not only this latitude but also beyond this latitude the region comes under a heat zone, heated हो जाता है। And when this region is heated, यहां पे क्या बनता है? लो प्रेशर। क्या क्रिएट होगा?
This entire zone comes under low pressure. And since landmass is huge, there is a word we use with Asia, and that word is called continentality. क्या बोलते हैं? Continentality is the condition of existence of a huge landmass. एशिया बहुत बड़ा है. नॉर्थ इंडियन ओशन उसके कंपैरिजन में इट्स क्वाइट स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ geographical area. So what we are essentially saying is continentality is higher of Asia, because of which low pressure, an intense low pressure is induced on the landmass, particularly South Asia. ये पूरा हमारा जो बेल्ट है जहां पे आप ये सन देख रहे हैं, पूरा साउथ एशिया का बेल्ट, राइट? And in comparison to this low pressure, the pressure in the North Indian Ocean is relatively higher. मैंने आपको बताया था पहले, लैंड मास जल्दी हीट अप हो जाता है, लैंड मास गेट्स हीटेड अप क्विकली, और इतना बड़ा लैंड मास है ये काफी ज्यादा हीट अप होता है समर्स में, particularly May and June, and intense low pressure is set up around South Asia, in comparison to which in the North Indian Ocean we find relative high pressure. Now because of this pressure difference between land and ocean, एक wind blow करती है, from high pressure to low pressure. Wind blow करती है from high pressure to low pressure, right? And these winds which are blowing due to large pressure difference, high pressure minus low pressure, is extremely high, South Asia versus Indian Ocean. Such winds are called monsoonal winds. क्या बोलते हैं इनको? Monsoonal winds. एशिया में आते ही सीजनल कैरेक्टर शुरू हो जाता है. Seasons determine the blowing of winds. लेकिन अभी तक हमने देखा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनका within the tropics landmass is not as huge as we see of Asia. Asia is a huge landmass, largest continent among all the continents. एशिया के साथ ही हम एक वर्ड यूज करते हैं मॉनसून. और ये जो विंड्स हैं which are blowing because of pressure difference, large pressure difference, normal pressure difference की वजह से नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्लीज, नॉर्थ वेस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली सब ब्लो करते हैं, राइट? बट ये इंटेंस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो winds blow करते हैं उसको हम बोलते हैं monsoonal winds. Now these green color winds you see on your screen blowing from North Indian Ocean to Asia, they are monsoonal winds, and because of their direction we call them southwest monsoon. क्या बोलते हैं डायरेक्शन की वजह से? They are called southwest monsoon. और यही कारण है इंडिया और नियर बाई कंट्रीज में लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें जो भी रेनफॉल होती है समर्स के टाइम में, उसका कारण एक ही है, वो क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून. अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से जो हमने करंट देखा था अभी, कौन सा करंट देखा था? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था ना यहाँ पे. अभी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ क्या होता है कि जो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस मिलता है. क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है किससे? साउथ वेस्ट मॉनसून से. ठीक है.
अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून का जो डायरेक्शन है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो समझ में आ गया, नॉर्थ इंडियन ओशियन से साउथ एशिया, लेकिन इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है. व्हाई नॉट ओनली साउथ? These winds are not like this, they are like this. क्यों? Because of? Coriolis force. Very good. Because of Coriolis force, जो कहती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब winds blow करेंगे तो they will turn right, they will bend towards their right. तो ये wind भी right में bend हो गया, इसलिए it has become from southern direction, it has become southwestern direction. Now this southwestern direction की वजह से क्या हुआ, जो ईस्ट टू वेस्ट आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो कर रहा था उसको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, और ओशियन का जो पानी है वो कहां बहने लगा, टुवर्ड्स साउथ एशिया, क्योंकि जहां विंड जा रही है वहीं पे वो वेव्स को भी ड्रैग करेगी, राइट, वेव्स को भी ड्रैग करेगी. तो एज सच विंड्स डोमिनेट करते हैं यहां पे, पूरा का पूरा जोन वार्म वाटर का ही है, लेकिन लैंड से रिलेटिवली लेस वार्म है. कोई करंट नहीं है जो शोरलाइन को वॉश करता हो, एक्सेप्ट एवरीथिंग इज वार्म वाटर except north equatorial current which is flowing around equator. Southwest monsoonal winds, they also take the oceanic water towards South Asia. अब इसमें देखिए, एक आपने नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखा, दूसरा ये जोन देख रहे हैं आप, ये वाला साउथ ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. यहां क्या होता है, लेट अस हैव अ लुक. I'll come back to the diagram, पहले इसको समझ लो, ठीक है. अभी देखिए, ये क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून, and here the north equatorial current is flowing, ठीक है. आज मैं एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसका नाम है अपवेलिंग. अपवेलिंग क्या होता है कि जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ओके, अब हमको एक चीज क्लियर हो गई है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है दे आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग विंड्स. ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं जो साउथ एशिया की तरफ ब्लो कर रही हैं, नाउ दीज स्ट्रॉन्ग विंड्स ये क्या करते हैं, ओशियन के जो सरफेशियल वाटर है, ओशियन का जो सरफेशियल वाटर है उसको डिस्प्लेस करती है. क्या करती है, दे डिस्प्लेस सरफेशियल वाटर इन द ओशन. किससे डिस्प्लेस तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि जगह खाली हो गई तो हॉलो बन गया. जो सब सरफेशियल वाटर है, जो सब सरफेशियल वाटर है वो जगह ले लेता है किसकी, सरफेशियल वाटर. आपने कभी देखा है, कभी आपने मूवीज में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव करती हैं किसी ओशियनिक सरफेस के ऊपर, ऐसा लगता है ना कि सरफेस वाटर डिस्प्लेस हो गया वहां से, लेकिन वो जगह कुछ सेकंड्स से ज्यादा इट डज नॉट रिमेन लाइक अ डिप्रेशन.
उसको सब सरफेशियल वाटर रिप्लेस कर देता है, राइट? और ये जो सब सरफेशियल वाटर है, पर्टिकुलरली इन दिस जोन ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन, दिस इज स्लाइटली कूलर. It is slightly cooler than surfacial water. Slightly cooler than surfacial water. और इसी प्रोसेस को, which is displacement of surfacial water followed by replacement of this surfacial water by subsurfacial water which is slightly cooler, is called upwelling. इसी को क्या बोलते हैं? Upwelling. और इस अपवेलिंग की वजह से जो यहां पे कूलर वाटर ऊपर आता है मॉनसून के टाइम पे, समर्स में, उसको बोलते हैं सोमाली करंट. क्या नाम है? सोमाली करंट इज सीजनल. इट डज नॉट कम at every month of the year. It is seasonal. Neither it comes in every season, neither in every month. It comes only during summers. And what is this? This is basically the outcome of upwelling. Means because of blowing of strong southwest monsoonal winds, subsurfacial water takes the place of surfacial water. और वो स्लाइटली कूलर है और उसी रिप्लेसमेंट को हम बोलते हैं सोमाली करंट. तो सोमाली करंट इज नथिंग बट इट्स अ कूल करंट. वी डोंट कॉल इट कोल्ड. ये पोल से नहीं आ रहा है. ये कहां से आ रहा है? सब सरफेशियल पानी किसकी जगह ले रहा है? सरफेशियल वाटर की. It's a cool current because it is existing in the equatorial water only. And क्योंकि this current is found alongside eastern coast of Australia, south of Arabian Peninsula, it is named after one of the countries in Africa. Oh, sorry, eastern coast of Africa and south of Arabian Peninsula. It is named after one of the countries in Africa, which is Somalia. Somali current only exists during monsoons in the season of summers when southwest monsoonal winds are blowing from ocean to land. इसको बना लो फिर हम लिखेंगे. ये बना लिया था डायग्राम, ये वाला. Is this diagram made? Hello, sir. Kunal, sir. Hello. हाँ बोलो. Sir. Sir, आपका कलर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं सर? हाँ हो रहा है. आपका कलर रिकॉर्डिंग हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है. Okay, sir. Sir, मैं यहाँ से last time में It's okay, it's okay. हो रहा है, हो रहा है. Is this diagram made and this one? Yes, बोलो. Upwelling is? Yes, yes, yes. ये देखिए, yes, yes, correct. देखिए ये सरफेशियल वाटर है ना आपका. इसके ऊपर जब when strong winds blow, what they tend to do is
they take the surfacial water and जैसे ही वो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जगह कौन ले लेता है? Subsurfacial water. This process of replacement of surfacial water with subsurfacial water is called upwelling. आप इसको लिख लो डायग्राम को, है ना, ये जो है यहाँ पे बना लो इसको. I will dictate. Okay? Please let me know when it is done. Done? Shall I dictate? ये जो सोमाली करंट का जोन है, ये आप इंडिया यहाँ पे यही जोन है, ठीक है, इसी को शेड कर देना. Please write, लिखो. During summers in the North Indian Ocean, during summers in the North Indian Ocean, comma, an intense southwest and हटा देना, sorry. During summers in the North Indian Ocean, comma, intense southwest monsoonal winds blow. Intense southwest monsoonal winds blow towards South Asia, towards South Asia. Full stop. These winds are a result of large pressure gradient. These winds are a result of large pressure gradient. Gradient, large pressure gradient between huge Asiatic landmass, between huge Asiatic landmass spelling is on the board, and North Indian Ocean, and North Indian Ocean. Full stop. The continentality of Asia, the continentality
of Asia induces such large pressure gradient between the landmass and the ocean. The continentality of Asia induces such large pressure gradient between landmass and the ocean, comma, intense low pressure in South Asia and a relative high pressure in the North Indian Ocean is found. Intense low pressure in South Asia and a relative high pressure in the North Indian Ocean is found. Full stop. Strong southwest monsoonal winds blow from ocean to land Full stop. These winds resist the north equatorial current. These winds resist the north equatorial current and make it slow during the summer season. Make it slow during the summer season. Full stop. Also, east of Africa, around equatorial region, from where the winds blow towards South Asia, comma, upwelling of surfacial water occurs. Full stop. It is the process of displacement of warm surfacial water followed by cooler subsurfacial water
replacing it, followed by cooler. COOLER, cooler subsurfacial water, replacing it. Full stop. This cool current, which appears temporarily, this cool current, which appears temporarily, is called Somali current. Is called Somali current. Full stop. Upwelling is a rare phenomena. Upwelling is a rare phenomena occurring in the ocean zones where wind speeds are extremely high. Wind speeds are extremely high. Full stop. Since Somali current is cool subsurfacial water near equator, since Somali current is cool subsurfacial water near equator, it is a cool current and not a cold current. It is a cool current and not a cold current. Please open the bracket and write, in most of the continents, cold currents are originating from the higher latitudes in the polar region. Are originating in the higher latitudes in the polar region. Bracket close. Hence, in the North Indian Ocean during summers, a slow north equatorial current is observed. A slow north equatorial current is observed along with cool Somali current. Sir, a slow North equatorial current is observed along with cool Somali current.
अब देखते हैं विंटर्स में सिनारियो। विंटर्स में कंडीशन रिवर्स हो जाती है ना, क्योंकि ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नाउ देयर इज नो डायरेक्ट सन ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। विंटर्स में दिसंबर में वेयर इज द सन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कहां मिलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पे? अगर हम देखें वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द रीजन्स इज ऑस्ट्रेलिया, यस, सन इज हियर। तो इन द एब्सेंस ऑफ द सन यहां पे क्या होता है? हाई प्रेशर, लैंड बिकम्स cold very quickly, and because land has become cold during winters, the oceanic water still remains slightly warmer. तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? लो प्रेशर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था पहले कि लैंड बिकम्स कोल्डर एंड क्विकली देन वाटर, तो oceanic water is slightly warmer than the land mass during winters. And when pressure conditions reverse, तो wind का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। कैसे ब्लो करेंगे विंड? लाइक दिस, टुवर्ड्स इक्वेटर, यस। और इन्हीं विंड्स को which blow from the cold land mass of South Asia, because it is a high pressure zone, towards the low pressure in the North Indian Ocean, these winds are called north ईस्ट। डायरेक्शन की वजह से क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। बिकॉज दे आर नॉट ब्लोइंग स्ट्रेट, दे आर bending towards their right, and since they bend towards their right, they become northeasterly in direction, and since they are blowing because of intense pressure difference, प्रेशर डिफरेंस क्या है इस केस में? हाई प्रेशर कहां पे है? लैंड पे, माइनस लो प्रेशर कहां है? ओशन में। और इसकी वजह से ओरिजिनेट होती हैं, सो दिस pressure difference, PD I'm writing, is large, and since the winds are northeasterly in direction, they are called northeast monsoon. Okay, ये देख रहे हैं आप यहां पे ये वाला करंट, कौन सा करंट है ये? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। So you see, northeast monsoonal winds are reinforcing or strengthening the north equatorial current, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का भी डायरेक्शन in a way is from east to west, and north equatorial current is also east to west. So this is a brief period only for winters, particularly from November to January. उसमें ज्यादा स्ट्रांग होता है। फरवरी से मॉनसूनल विंड्स वीक हो जाती हैं क्योंकि लैंड मास फिर से गर्म होने लगता है, राइट।
brief period of time के लिए northeast monsoonal winds blow outwards from South Asia towards North Indian Ocean, and somewhere they strengthen the North Equatorial Current. इसको डायग्राम को बना लो, then we'll write down. बन गया? Please let me know when it is done. Sir. Yes, sir. Please write down. During winters in the North Indian Ocean, during winters in the North Indian Ocean, comma, northeast monsoonal winds blow outwards from South Asian landmass. Northeast monsoonal winds blow outwards from South Asian landmass towards Indian Ocean. Indian Ocean. Full stop. Since the winds are blowing in a northeasterly direction, since the winds are blowing in a northeasterly direction, comma, they reinforce or strengthen the North Equatorial Current and strengthen the North Equatorial Current, which becomes stronger for a brief period during winters, for a brief period during winters from December to February, from December to January, for a brief period during winters from December to January. Next paragraph. In a nutshell, comma, North Equatorial Current is slow
during summers due to the blowing of north equatorial current is slow during summers due to the blowing of southwest monsoonal winds, whereas it is it is faster during winters due to the blowing of northeast monsoonal winds due to the blowing of northeast monsoonal winds. आपको इतना ही याद रखना है और समर्स में सोमाली करंट बस याद रखिए, ठीक है ना. नॉर्थ इंडियन ओशियन में यही है, विंटर्स में द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बिकम्स फास्टर एंड समर्स में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बिकम्स स्लोअर अलोंग विद ब्रीफ टाइम के लिए मई जून जुलाई में सोमाली करंट मिलता है, ठीक है. Is it clear until now? इंडियन मॉनसून को हम और डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है. अभी यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो करंट्स पे है, ठीक है. तो इसलिए हमने करंट्स के रिस्पेक्ट में वी हैव डिस्कस्ड हाउ मॉनसूनल विंड्स आर प्लेइंग अ रोल इन resisting or strengthening the north equatorial current. Okay. Now there's a new topic, shifting of pressure belts. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Shifting of pressure belts and winds. This topic we will start tomorrow. Okay. ठीक है. That's it for today because I don't want to start it for 10 minutes like, Let us continue this tomorrow. Okay. Thank you so much for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Don't miss this class, okay? It's very important. Shifting of pressure belts and winds. बोलो लक्ष्मी. Sir, एक doubt था sir, जो सोमाली करंट था, हम्म. साउथ वेस्ट मानसून जो है उसको अगर तब वो इंटरमीडिएट हो गया. सोमाली करंट ओशियन वाटर है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है. देखो